हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉएड चैनल। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और हम सेट ए सॉल्व करने वाले हैं। तो जिनका भी सेट ए था या कोई भी अगर सेट बी, सेट सी या सेट डी भी उनका था तो क्वेश्चंस तो सेम रहते हैं। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन सेट ए में पूछे गए हैं वही 100 क्वेश्चन आपको अदर सेट्स में भी पूछे जाएंगे। बस क्वेश्चंस जंबल किए हुए रहते हैं। अगर सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया है वही अदर क्वेश्चंस के सेट में दूसरे जगह पर पूछे जाते हैं। ओके, तो आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और आप ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 45% हमें लाना जरूरी है फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो अगर आपका 45 क्वेश्चन बन जा रहा है, 45 क्वेश्चन अगर आपने सही बनाए हैं, दैट मीन्स यू आर क्लियरिंग दिस एग्जाम। और ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first question is, in which case was a registered society held to be an authority for the purpose of Article 12? Okay? मैं डायरेक्टली आंसर आपको बताने वाली हूँ। मैं यहाँ पर ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आपके हाथ में भी क्वेश्चन पेपर है और आपने क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में ये हेल्ड करा गया था कि रजिस्टर्ड सोसाइटी टू बी हेल्ड टू बी एन अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स के नॉट बी वेव्ड? इनमें से कौन से केस में ये हेल्ड करा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को हम वेव नहीं कर सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स बसेश्वर नाथ वर्सेस आईटी कमिश्नर। ठीक है, आप अपने मार्क्स भी काउंट करते जाइएगा कि आपने कितने सही बनाए हैं, कितने गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज क्लॉज 4B इंसर्टेड इन आर्टिकल 16? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मींस बाय द 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्लॉज 4B को इंसर्ट कर दिया गया था आर्टिकल 16 में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is correct about 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। अगर हम 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो इट इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 239A बाय विच सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। It introduces Article 338 providing for the reservation of seats for women in the House of People. It also adds Article 334A, which states in that the said amendment will commence after the first census have been taken after the commencement of the said act, and the above stated shall cease to have effect on the expiration of period of 15 years from such commencement. ठीक है, from such commencement. ओके, SUCH होगा यहाँ। तो 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Parliament enacts the Fair Housing Act of 2024, which includes the following provisions. Okay, Section 3 prohibits discrimination in renting or selling houses based on religion, caste, or gender. Section 6 imposes a penalty of 10,000 rupees for the discrimination. And Section 10 makes it mandatory for the landlords to disclose the religious background of all tenants in the previous 10 years. A citizen challenges Section 10, arguing that it violates the right to privacy under Article 21 of the Indian Constitution. The Supreme Court declares Section 10 unconstitutional but upholds the provision of the law. ठीक है, Section 10 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि इट इज वायोलेटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सेक्शन 10 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारा हो गया, लेकिन पूरे लॉ को अपहोल्ड किया गया। तो ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये चीज करी गई है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी में हम सेपरेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों से। ठीक है, next question is, reports of the Controller and Auditor General of India relating to the accounts of state shall be submitted to the कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को हम कहाँ सबमिट करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following articles of the Constitution of India declares that Supreme Court shall be a court of record? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 129।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द पावर्स प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एज इट्स मेंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 105, आर्टिकल नंबर 105। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड प्रोविजंस रिलेटेड टू जीएसटी, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के अकॉर्डिंग कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंसर्ट करा गया? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट मींस 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मींस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, इट कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसिडर्स फोर्स टू बी क्रिमिनल फोर्स। फोर्स को हम क्रिमिनल फोर्स कब कहेंगे? एज पर द बीएनएस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस व्हेन इट इज यूज्ड इंटेंशनली विदाउट कंसेंट कॉजिंग इंजरी, फियर और अनॉयंस। क्रिमिनल फोर्स के आप डेफिनेशन देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023 what is the maximum fine for making or using a document that resembles a currency note or a bank note under section 182 clause 1? मैक्सिमम फाइन पूछा गया है 180 सेक्शन 182 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग। तो उस सेक्शन में साफ बातें करी गई है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स 300 रुपीज, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम फाइन फॉर मेकिंग और यूजिंग अ डॉक्यूमेंट दैट रिजेंबल्स अ करेंसी नोट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the right of the private defense of property extends to the voluntary causing of the death or of any other harm to the wrongdoer in which the offense is committed or attempting to be committed. तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ये एक रॉबरी भी है एंड ये हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट भी है, ठीक है। 1 और 2 बोथ होगा, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चंस मिलाते जा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजेश इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद सुनील strikes him with a heavy iron rod. The blow fractures Sunil's arm and he is unable to use it for several weeks. Okay, the medical report confirms that the fracture amounts to grievous hurt. मेडिकल रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि जो फ्रैक्चर है वो इट इज अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस हैज राजेश कमिटेड? राजेश ने कौन सा ऑफेंस कमिट करा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 325 ऑफ आईपीसी। ओके, ऑप्शन बी सही आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित इंटेंडिंग टू कॉज द डेथ ऑफ विजय attacks him with a knife. Vijay sustains severe injuries and dies on the spot. The investigation reveals that the Amit acted with the knowledge that his actions were likely to cause death. However, there is no evidence of premeditation or intent to murder Vijay. तो which of the following offenses has committed by Amit? कौन सा offense अमित ने commit करा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमित एंड रानी डिसाइड टू ब्रेक इनटू अ हाउस एट नाइट विद द इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग वैल्यूएबल्स। दे यूज अ crowbar to force open the door, but before they can take anything, the owner of the house, Vikram, unexpectedly arrives home. Amit and Rani panic and run away without stealing anything. The police arrest them the following morning based on the complaint from Vikram. So which of the following offenses under BNS have Amit and Rani committed? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स हाउस ट्रेसपास विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आपको हर एक क्वेश्चंस का मतलब अच्छे से समझना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी इस पर लेकर आऊंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने आंसर्स मैच कर पाएं, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं सारे क्वेश्चन करवा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके, आप क्वेश्चन नंबर मैच करते चलिएगा। पनिशमेंट फॉर रेप इन केसेस वेयर विक्टिम इज अ वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 और 12 is included in which section of the BNS? ठीक है, विक्टिम की हम बात कर रहे हैं, she is below 16 और 12 years। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस 65, सेक्शन नंबर 65।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डिफाइंस स्नैचिंग एज एन ऑफेंस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स सेक्शन 304। मैंने बोला था ये सेक्शन पढ़कर जाने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Mr. Patel, being a police officer, receives a complaint and information that Raju was involved in a robbery of bank and has also helped to hide the valuable properties in his farm, as stated by two villagers. With this regard, consider the following. ये सारे स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है एंड करेक्ट आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है, since the reasonable complaint against Raju has been received and there is a strong suspicion exists due to the testimony of the villagers, he can be immediately arrested and Raju can be arrested so as to prevent him from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts and circumstances. Okay, so these two statements are correct. Next question is, the BNSS introduced the provision of registration of FIR relating to the commission of cognizable offence, irrespective of area where the offence is committed. So this FIR is known as. ये थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट था हमारे लिए, पर अगर आपने BNSS अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 0 FIR. The next question is, BNSS mandates a forensic team to visit the crime scene to collect evidences for the offences punishable with imprisonment for at least how many years? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 7 years. आपने बैरेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका भी आंसर दे पाएंगे। ये सब इन्वेस्टिगेशन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, 20B, 21B. The next question is which section of the BNSS allows for the trial in absentia of the proclaimed offender? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर एब्सेंट है तो BNSS अलाउ करता है इनमें से कौन सा सेक्शन जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रायल चला सकते हैं, मतलब कोर्ट ट्रायल चला सकती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सेक्शन 356। मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर आया है, इसके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आई गेस इसने कई सारे क्वेश्चन सही किए हैं तो इनका क्लियर हो जाएगा ऑल इंडिया बार एग्जाम। Which section of the BNSS facilitates trials and proceedings to be held in electronic mode? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 530. ओके, सेक्शन 530. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द BNSS रिपील्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सेक्शन 531. दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द BNSS. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section mandates which section mandates the state government prepare and notify a witness protection scheme for the state with view to ensure the protection of witnesses? सी ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है हमारे BNSS में, इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने पहले भी कहा था आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स सेक्शन 398. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the BNSS mandates the appointment of the designed police officer in each district and police station to provide information about arrested individuals to the general public? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सेक्शन नंबर 37. The next question is, which section of the BNSS introduces provisions for identifying, attaching and forfeiting the property of the proclaimed offenders located outside India? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स सेक्शन नंबर 86. The next question is, which section of the BNSS places restrictions on the adjournment of trials, ensuring the expeditious resolutions of cases? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सेक्शन 346. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सूट इज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ए, बट वन ऑफ द पार्टीज, that is Meera, requests its transfer to District Court B, claiming that the judge in Court A is biased. The opposing party, Ravi, objects, stating that the request is baseless. Who has the authority to decide whether the suit can be transferred? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स हाई कोर्ट और दी सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ दोनों बात क्यों लिखी हुई है, क्योंकि अगर वो दोनों केसेस
एक ही स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है तब तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। The next question is question number 30. Okay, Maya files a suit in court A for the recovery of a sum of money from her neighbor Neha. During the proceedings, Neha requests that a third party, Seema, be added to the suit as Seema is allegedly liable for the debt. Maya objects, claiming that the Seema is not a necessary party. Court A then reviews the application and decides that Seema should indeed be included as defendant. So which principle of CPC is applied in this situation? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स ऑर्डर 1 रूल 10 जॉइंडर एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which section of CPC allows for the appeal from original decree? 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सेक्शन 91। The next question is under the CPC what is the maximum time limit for filing a written statement in a suit? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 120 डेज। मैक्सिमम टाइम लिमिट पूछा गया है। ओके, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 120 डेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which section of CPC provides exemption of the President of India and the governors of the state from personal appearance in court? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स सेक्शन 133। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34 what is the term used for the court's power to transfer a case from one court to another under CPC? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ सूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच ऑर्डर ऑफ CPC द प्रोसीजर फॉर समरी सूट इज प्रोवाइडेड? और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ऑर्डर नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 which section of CPC deals with the principle of res judicata? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सेक्शन नंबर 11 टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश ऑफ CPC प्रोवाइड्स फॉर एन इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट की हम बात कहाँ करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सेक्शन 88। विच सेक्शन ऑफ CPC प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट? 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स सेक्शन नंबर 35A कंपेंसेटरी कॉस्ट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 39 which word is inserted in section 22 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam that was not present in section 24 of the Evidence Act? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कोर्जन। कोर्जन एडेड नहीं था। एक्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट इज डिस्कस्ड इन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सेक्शन नंबर 14 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप आप आंसर्स मैच करते चल रहे हैं, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41 इन अ क्रिमिनल ट्रायल राजेश इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस रिकवर अ स्टोलन laptop from the location known to be frequented by Rajesh. His fingerprints are found on the laptop. According to Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, how should the court interpret this piece of evidence? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स the recovered laptop and fingerprints are circumstantial evidence that can be considered along with other evidences but do not by themselves prove guilty beyond the reasonable doubt. Okay, ये circumstantial evidences हो जाएंगे। Question number 42 where a document is executed in several parts like printing, lithography, photography, video conferencing, computer resource as electronic or digital record, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam clarifies each part as, इन सारे पार्ट्स को क्या मानता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एविडेंस। बिकॉज हम प्रिंट कर रहे हैं, फोटोग्राफी ले रहे हैं, ये सारे तो सेकेंडरी चीजें हो गई ना, कंप्यूटर रिसोर्स, वीडियो रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 42 मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्राइमरी एविडेंस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which section of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam provides that no court shall require any communication between the ministers and the President of India to be produced before it? And question number 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स सेक्शन नंबर 165।
मैंने ऊपर एक और क्वेश्चन अभी बताया था रिटन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में कि कितने दिनों में रिटन स्टेटमेंट हमें फाइल करना है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 30 डेज। ओके, उसमें मैंने 120 डेज बता दिया है। सी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 30 डेज। ओके, ये करेक्ट आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, व्हेन कैरेक्टर एविडेंस इज रेलेवेंट इन सिविल केसेस, सिविल मामलों में कैरेक्टर को कब हम एविडेंस मानते हैं, रेलेवेंट एविडेंस? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। एज पर सेक्शन 78 क्लॉज 2 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, प्रिजम्पशन अबाउट द ऑफिसर साइनिंग और सर्टिफाइंग अ डॉक्यूमेंट इज, तो ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है? तो द ऑफिसर हेल्ड द ऑफिशियल कैरेक्टर क्लेम्ड व्हेन साइनिंग और सर्टिफाइंग द डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 146 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, व्हेन द लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिसिबल इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, लीडिंग क्वेश्चंस कब परमिसिबल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स लीडिंग क्वेश्चंस आर परमिटेड ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, हम एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ नहीं करते हैं जब तक कि कोर्ट की परमिशन हम ना ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिएशन, क्वेश्चन नंबर 47 है ये, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इन्वॉल्व्स अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है a dispute arises between ABC Limited and XYZ Private Limited regarding a contract that both parties had entered into. The agreement includes an arbitration clause which states that any disputes shall be referred to arbitration. However, the parties fail to agree on the appointment of an arbitrator. So, which of the following provision of the Arbitration and Conciliation Act 1996 would be applicable to resolve the issue of the appointment of an arbitrator? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स द कोर्ट विल अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन 11 इफ द पार्टीज फेल टू एग्री ऑन वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एडीआर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एडीआर? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ बाइंडिंग डिसीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kiran and Meera are involved in an arbitration. ये question number 50 है, where Kiran was awarded 10 lakh rupees as compensation. Meera refuses to pay the amount, arguing that the award was not enforceable because of certain procedural irregularities in the arbitration process. Kiran decided to approach the court to enforce the arbitral award. So, which of the following provision of the Arbitration and Conciliation Act governs the enforcement of an arbitral award? तो अगर हम आर्बिट्रल अवार्ड की बात करें तो हमें सेक्शन 36 में जाना पड़ेगा, दैट अलाउज फॉर द ऑटोमेटिक एनफोर्समेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड अनलेस सेट असाइड बाय द कोर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन डिस्कसेस विद रिगार्ड टू सपिंडा रिलेशनशिप्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट का आपने वीडियोस देखा होगा, मैंने कोर्स कंप्लीट करा दिया था, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ाया है मैंने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स सेक्शन 3F के 1 and 2 explanation to section 3G and 5F talks about the Sapinda relationship. Right? Next question is under section 5 of the Hindu Marriage Act, the divorced person to marry again. Okay, this is section number 15. Okay, ये roll number की वजह से hide हो गया थोड़ा, ये section 15 है, the divorced person to marry again. कब divorced person शादी दोबारा कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, में मैरी इमीडिएटली thereafter विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ राइट वो शादी कर सकता है, लेकिन एक और क्लॉज इसमें दिया हुआ है सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग, दैट हमारे पास अगर हमें किसी पर्सन से शादी करनी है आफ्टर टेकिंग अ डिवोर्स, देयर शुड नॉट बी एनी ग्राउंड जिसमें हम अपील ले सकते हैं या अपील की डिग्री कहीं ऑलरेडी चल ना रही हो, और अगर अपील का टाइम एक्सपायर हो जाता है, दैट मीन्स लिमिटेशन से अगर बाहर हो जाता है, उसके बाद ही हम शादी कर सकते हैं। तो इट मे बी सी या फिर डी भी हो सकता है, नन ऑफ दीज, बिकॉज उस क्लॉज के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करी गई है अपील वाले मैटर के बारे में। राइट, तो देखते हैं AIB की तरफ से क्या सही आंसर आता है।
Next question is question number 53. Aarti and Rajesh have been married for 5 years. Over time, Aarti has been subjected to continuous cruelty by Rajesh, which has led to the emotional and mental distress. Aarti decided to file for divorce on the ground of cruelty under section 13(1)(1)(a of the Hindu Marriage Act 1955. ठीक है, सेक्शन 13 में हम डाइवोर्स से रिलेटेड बात करते हैं एंड 13 के 1 में हमें ग्राउंड्स मिलते हैं ऑफ फाइलिंग अ डिवोर्स. ओके, तो 53 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 53 में सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. दैट मींस आरती कैन सीक डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी एज लॉन्ग एज शी प्रूव्स मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. ऑन मैटर्स वेयर द दया भागा इज साइलेंट व्हाट प्रिवेल्स. जहां पर दया भागा साइलेंट रहता है वहां पर मिताक्षरा प्रिवेल करता है. ओके, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Nisha and Akash are separated and they both seek custody of their minor child, Arav. Nisha has been the primary caregiver while Akash claims that he can provide better financial stability for Arav. ठीक है, मदर ये क्लेम कर रही है कि वो केयर कर सकती हैं ज़्यादा अच्छे से एंड हिज फादर इज क्लेमिंग दैट ही कैन प्रोवाइड अ बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो they both approach the court under the Guardians and Wards Act 1890. ये एक्ट भी मैंने पढ़ाया है. Which of the following factors will the court primarily consider in determining the custody of Arav? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. दैट मीन्स द वेलफेयर एंड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. बताया था मैंने. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें मैच करना था और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. दैट मीन्स स्पोकन वर्ड्स को हम सुन्नत उल कॉल कहते हैं. ठीक है, दीपिका वर्सेस सीएटी का केस हमारा जाएगा एटिपिकल रिलेशनशिप में. ठीक है, दैट मीन्स 4 हो जाएगा. साइलेंस की अगर हम बात करें तो सुन्नत उल तकरीर हो जाएगा एंड डी की हम बात करें अस्कौर वर्सेस करतार सिंह के केस की बात करें तो ये रिलेटेड है कस्टमरी लॉ से एंड शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वी ऑल नो इट टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस. दैट मीन्स 6. ठीक है, सॉरी, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द ट्रिपल तलाक. ओके, ये कैसे गलत हो सकता है, ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है. ठीक है. The next question is question number 57. Fatima, a Muslim woman, has been divorced by her husband Imran through talaq. Fatima is now seeking maintenance from Imran for herself and her 2 minor children. Imran argues that Fatima has remarried and therefore is not entitled to any maintenance. Okay? Under Muslim law, which of the following statement is true with regard to Fatima's claim for maintenance? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बिकॉज एज पर मुस्लिम मेंटेनेंस फातिमा इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज शी हैज रीमैरिड. ठीक है, अगर हम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जाएं या फिर हम सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जाएं, इन एनी वे शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज शी हैज रीमैरिड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58. रेमेडी फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. ये मैंने एमसीक्यूज में भी आपको कराया है. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. दैट मीन्स सेक्शन 9. अगर आप बैरक लेकर गए होंगे तो आपको इंडेक्स में ही इसका आंसर मिल गया होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस अ प्रिजन इमिनेट सेंट अ लेटर टू द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइबिंग फिजिकल टॉर्चर विच बिकेम द पायनियर इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दो द कोर्ट लेटर abandoned the practice of considering letters. कौन से केस में कोर्ट लेटर abandoned the practice of considering letters? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. दैट मीन्स हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60. इन अर्ली 1980s a social activist group discovered severe exploitation of the laborers working in stone quarries near Delhi. The workers, including many children, were working in extremely hazardous conditions, living in makeshift shelters, and were effectively trapped in a cycle of debt and forced labor. The conditions revealed systematic violations of the fundamental human rights. The Supreme Court was approached to look into the dire circumstances of the working persons and one of the following views of the court was sustained in the said case. Identify from the following. इनमें से कौन से स्टेटमेंट को कोर्ट ने अप्रोच करा था, कोर्ट ने हेल्ड करा था, कोर्ट की क्या व्यू रही थी विद रिगार्ड टू दिस सर्कमस्टांस.
तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट द फोर्स्ड लेबर एज अ फंडामेंटल राइट डिराइव्ड फ्रॉम राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21. ओके, 60 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61. रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 हमारा है, इन PIL केसेस द कोर्ट प्लेज a passive role similar to traditional cases. And statement 2 says that PIL is primarily focused on individual disputes. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन. ठीक है, असर्शन और उसकी रीजनिंग आपको बतानी है. असर्शन हमारा है, द कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई इज रिलैक्स्ड इन PIL केसेस. और रीजनिंग दी जा रही है कि PIL अलाउज एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स. तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ above two statements, which of the following is correct? सही आंसर हो जाएगा both these statements are correct and R is the correct explanation of A. That means option number A हमारा सही आंसर है of question number 62. The next question is which of the following best defines delegated legislation? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स द लॉज मेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर पावर गिवन टू देम बाय द पार्लियामेंट. ओके, दिस इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. मतलब हम अगर पार्लियामेंट है, हमारे पास पावर है कि हमने डेलीगेट कर दी किसी और को पावर. ठीक है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, एंड दैट अथॉरिटी इज नाउ मेकिंग लॉज. ठीक है, जो पावर हमने उसे दी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64. इन 2020 एट Dhurodo village, the panchayat elections could not happen due to COVID pandemic, while the tenure of the panchayat was getting over that year itself. Mr. Haribans represented the people that year and panchayat post dissolution of the panchayat tenure and made a law exercising the delegated power by the Panchayati Raj Act of the state to restrict their economic activities per day to ₹100 only. In which of the following case this is allowed or restricted? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स MCD वर्सेस बिरला कॉटन मिल्स. ठीक है, केस लॉज के क्वेश्चंस में आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी, एंड लकीली हमारे पास ज्यादा केस लॉज नहीं इस बार आए हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं. अगर आपने इंडेक्स एक बार भी पढ़ा होगा, आपने मेरी एक दो वीडियो भी देखी होगी, एक वीडियो भी देख ली होगी जिसमें मैंने टिप्स आपके साथ शेयर करे थे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो काफ़ी हेल्प मिली होगी. आप अगर लास्ट डे भी अच्छे से पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को, अभी तक जितना क्वेश्चन पेपर देख के मुझे समझ आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 65 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ग्राउंड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ओनली 4. मतलब पब्लिक ओपिनियन की हम बात करेंगे. ओके, पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. ठीक, इलीगैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड इरैशनैलिटी तो है. व्हाट डज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेफर टू इन प्रोफेशनल एथिक्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अ सिचुएशन वेयर द पर्सनल इंटरेस्ट conflict with professional duties, that is known as conflict of interest. The next question is question 67. Advocate Mr. X was representing a client Mr. Y in a property dispute case. During the proceeding, advocate Mr. X accepted a bribe from opposing party to delay the case, causing significant harm to Mr. Y's interests. Moreover, Mr. X failed to inform his client about the critical hearing dates leading to the adverse judgment. On the basis of the above problem, select the correct option, and the correct option will be option number A. That means it is a violative of rules made by the Bar Council of India for the professional ethics. The next question is nature of proceedings in case of the professional misconduct. And the correct answer will be option number C, that means quasi criminal nature. Only 3 हो जाएगा हमारा quasi criminal nature. Question number 69. Appropriate procedural safeguards help reduce threats to objectivity and counter any perception of possible bias. Which of the following is not a procedural safeguard? Procedural safeguard नहीं है. ठीक है, सही आंसर हो जाएगा
Statement 2, that means providing peer review of valuation if necessary, that means option number B सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 में। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करें, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 84 शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स, शेयर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस स्टॉक्स इंक्लूड होती है, स्टॉक्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, option number B, that means kinds of share capital. The next question is question number 72. A manufacturing company in the city of Surat named as X has been discharging untreated industrial waste into a nearby river, violating the provisions of the Environmental Protection Act 1986 and the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. This has resulted in severe pollution, making the river water unsafe for drinking and harming aquatic life. Local farmers and residents who rely on the river for irrigation and daily needs have started facing health issues and crop failures due to the contaminated water. So despite multiple complaints to the local pollution control board, no action has been taken against the company. Based on the above problem, select the correct answer. Okay, I think you got the problem. And the sahi answer will be option number A, that means it is the violation of section 24 of the Water Prevention and Control of the Pollution Act 1974. Violation of section 24. Okay. Next question is, which of the following act is popularly known as umbrella legislation? Umbrella legislation हम किसे कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, that means the Environment Protection Act 1986 is known as the umbrella legislation. Question number 74. Which of the following are included under section 2 clause 1 subclause W of the IT Act describing the intermediary? And the sahi answer and the correct answer to this question will be option number C. That means हम cyber cafe भी describe करते हैं उसे, telecom regulators and also internet service providers. The next question is, Malti, a small business owner, runs an online clothing store. ठीक है, recently she noticed that her website has been hacked and her customers' personal information including names, address and payment details was stolen. Shortly after some of her customers reported unauthorized transaction on their accounts, Malti wishes to file a complaint against the incident. On the basis of above problem, select the correct option. तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स इट इज पनिशेबल अंडर section 66 of the IT Act and the customers can also claim compensation under certain circumstances. The next question is, which of the following are included under the definition of employer given under the Industrial Relation Code 2020? Question number 76 and the sahi answer is option number B. Correct answer is option number B. That means occupier of the factory include हो जाएगा, manager of the factory and also the managing director of the factory. Question number 77. Which of the following legislations has been included under the Social Security Code 2020? And the correct answer to this question is option number D, that means all of the above. हम include करते हैं Maternity Benefit Act 1961, Payment of Gratuity Act 1972, Payments of Bonus Act 1965 and also the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959. Question number 78. Dash have not been set up under the provisions of the Industrial Dispute Act 1947 for adjudication of industrial disputes in an organization. And इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, that means the environmental tribunals. The next question is question number 79. Okay. XYZ Textiles Limited, a manufacturing company, recently terminated 4 workers without providing any compensation. The termination was because of the misconduct on part of the workers. The company issued a show cause notice and disciplinary inquiry was also conducted against them. On the basis of recommendations of the committee, the services of these employees were terminated. The workers claimed the retrenchment compensation, which was rejected by the management. Agreed by the rejection, the workers have filed a complaint in the Labour Court under the provisions of the Industrial Disputes Act 1947. So based on the above problem, select the correct answer. और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स द टर्मिनेशन अमाउंट्स टू ले ऑफ, हेंस कंपेंसेशन विल बी अवॉर्डेड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80.
Miss J, a banker, refused to honor check of Miss F. Though she was having sufficient balance, yet it doesn't suffer any loss to Miss F. Miss F can file a case under which scenario? Correct answer will be option number B, that means injuria sine damno. और अगर आपके राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, दैट मीन्स अगर आपको कोई लीगल इंजरी हो रही है इवन विदाउट द डैमेज, विदाउट एनी डैमेजेस, तो यू कैन क्लेम compensation, right? The next question is, Mr. B told Mr. A to leave the premises in occupation of Mr. A. When Mr. A refused, then Mr. B collected some of his workmen who mustered round Mr. A. They tucking up their sleeves and aprons and threatened to break the plaintiff's neck. He did not leave. Under which tortious act Mr. A can file the case? Correct answer will be option number B, that means assault. Those persons were tucking their sleeves and aprons and threatening to break the plaintiff's neck. ठीक है, हम सिर्फ threaten कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे gestures दिखा रहे हैं जिससे सामने वाला डर जा रहा है, तो that is known as assault as per tort law. Okay, next question is Miss J, question number 82 पढ़ रही हूँ. Miss J, knowing while taking the lift that driver Mr. T was under the influence of alcohol, ठीक है, consequently car met with an accident and Miss J got injuries and she has filed the case for compensation. Which defense could be claimed by Mr. T? Option A, that means voluntary non-fit injuria can be claimed by Mr. T because she was already knowing that Mr. T is under the influence of alcohol. Still she asked for the lift और वो कार में बैठती है, ठीक है. तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि voluntary non-fit injuria है, that means you are aware of the circumstances, you are aware of the danger, still you are doing that thing. Question number 83. Mr. K is owner of a building containing a large number of rooms and had derived a considerable income by letting them. Mr. Y is owner of an adjacent cotton mill which erected after the occupation by Mr. K. Owing to noise and smoke of the mill, several rooms remain vacant that results into the loss for Mr. K. Examine relevant case law for this. Okay, relevant word for this case. Okay, relevant tort पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, tort है ये. क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स डैमनम सिने इंजुरिया. आपके साथ डैमेज तो हो गया, आपको लॉस तो हो गया है, लेकिन आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 84. देयर वाज अ कॉलिजन बिटवीन टू बसेस, वन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अनदर वाज प्राइवेट बस, ठीक है, wherein private bus was coming from the wrong side and the government bus was coming rashly. मतलब प्राइवेट बस की भी यहाँ गलती है एंड गवर्नमेंट बस की भी गलती है. प्राइवेट बस गलत रास्ते से आ रही थी, गवर्नमेंट बस रैशली आ रही थी. Neither slowing down his bus after seeing the other bus determined the tortious act. तो यहाँ पर हुआ है contributory negligence, दोनों की गलती है. क्वेश्चन नंबर 85. टर्म इनकम इज डिस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट अंडर, कौन सा सेक्शन में इनकम वर्ड को डिफाइन करा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. The next question is question number 86. Mr. X deposited rupees 65,000 in term deposit of 5 years with the post office to avail tax deduction under section 80C. Assuming Mr. X does not opt for the concessional tax regime under section 115B AC of the Income Tax Act 1961. Okay. Correct answer to this question will be option number B, that means Mr. X is not guilty of either tax evasion or tax avoidance. हमारा next question है, आपको statements read करना है और बताना है कौन से statements सही हैं या दोनों सही हैं या क्या गलत है. Agricultural income is exempt from the tax under section 10 clause 1 of the Income Tax Act 1961. Statement 2 is, tax on the non-agricultural in case of non-agricultural income exceeds basic exemption limit and agricultural income exceeds 5,000 rupees is determined by scheme of the partial integration of the non-agricultural income with agricultural income. Correct answer is option number D, that means both the statements are correct. Question number 88. Rent-free accommodation provided by an employer to employees. Correct answer is option number A, that means prerequisite as per section 17 clause 2 of the Income Tax Act. Next question is,
An agreement not enforceable by law is said to be void under. Option number D, that means section 2G of the Indian Contract Act. Indian Contract Act का question है, पता है ना? Question number 90. The concept of invalid guarantee is covered under which section? Invalid guarantee की अगर हम बात करें तो it comes under section 42 and section 142 to 144 of the Indian Contract Act. ठीक है? The next question is question number 91. A real estate developer entered into the contract with B, the owner of the piece of prime land, for the purchase of her property. The contract stipulated that A would pay rupees 50 lakh in advance and the remaining 1 crore within 6 months. In return, B agreed to transfer the title to the land. However, after receiving the advance payment, B refused to execute the sale deed, claiming that she received a better offer from another buyer. A demanded the enforcement of the contract under Specific Relief Act 1963, but B denied his claim. A has to file a suit in a court of law. On the basis of above problems, select the correct answer. And the correct answer will be option number B. That means A may file a suit in the special court constituted under the Specific Relief Act 1963. Okay, SRA का question था ये. Next question is question number 92. A transfers a piece of land to B on the condition that B shall not transfer the land to anyone else for the next 10 years. In this case, B has no right to transfer the land to someone else for the next 10 years. On the basis of above problem, select the correct answer. Correct answer will be option number B, that means it amounts to conditional limitation on transfer of property. ठीक है, conditional limitation है ये on transfer of property. ये TPA का question है. Question number 93. Mr. Rajesh issued a check of 50,000 rupees to his supplier, Mr. Sharma, for the payment of goods purchased. When Mr. Sharma deposited the check, it was returned by the bank with the remark insufficient funds. So on the basis of the above problem, select the correct option. Correct option will be option number A. That means a complaint in writing is to be made by Mr. Sharma in court within 3 months from the date of dishonor of check. Within 3 months. Okay. The next question is section number 31 of the Specific Relief Act 1963 is related to option number B, that means cancellation of instruments. अगर आप SRA की भी बैरक लेकर गए होंगे तो इंडेक्स देखकर आप इसका आंसर दे सकते हैं. Next question is how the recovery of specific immovable property may be enforced. Correct answer is option number D, that means a person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. The next question is which section, okay, question number 96 हम देख रहे हैं, which section of the law of contract defines a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. Correct answer will be option number A, that means section 5. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्टार्टिंग पढ़ा होगा, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो यू कैन इजिली गिव दिस आंसर. क्वेश्चन नंबर 97. अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट 2013, गवर्नमेंट्स कैन एक्वायर लैंड फॉर ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स इन तीनों मामले में गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए, प्रोजेक्ट्स फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट्स, and for public-private partnership projects where government ownership of land will remain with the government. Question number 98. Land Acquisition Act 2013 in India has replaced which earlier legislation? Correct answer is option number C, that means the Land Acquisition Act 1894 को replace कर दिया गया by the Land Acquisition Act of 2013. हमारा next question है question number 99. Soham, an independent software developer, created a mobile app called FitLife that provides personalized fitness plans. He registered the app's name and logo under the trademark law and copyrighted the app's source code. However, the 6 months after its launch, Soham discovered a competing app called FitLife with a similar logo and features being marketed by the large tech company.
Soham believes the competing app copied element of his source code and intentionally used a confusingly similar name and logo to mislead the customers. So on the basis of our problem, select the correct option. Under the trademark law, can Soham claim infringement for the use of similar name and logo by competing the app? Correct answer will be option number B. Option number A. Yes, if he can prove that the names are confusingly similar. Okay. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100. What is the duration of copyright protection for literary works in India? मैं बता दूं ये लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था. सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. और इसी के साथ हमारा ऑल इंडिया बार एग्जाम का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है. हमने सेट ए कंप्लीट कर लिया है. मैंने कोशिश करा कि कम से कम समय में पूरे 100 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर सकूं, इसीलिए मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं. मैं जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते गई और आंसर्स आपको बताते गई, ताकि आप अपनी क्वेश्चन पेपर में मार्क कर सकें और सही आंसर चूज कर सकें. और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.